Good afternoon, everyone. This is Asad Ali, and you are watching Sayyid Fazil Bukhari's YouTube channel. So you can see here in the screen that I'll be talking about international relations. So in this series of international relations part 1, I'll be covering whole outline that is being provided by FPSC, Federal Public Service Commission. So in my very first lecture, I'm going to talk about the syllabus or the outline for international relations part 1. ये जो लेक्चर सीरीज कंडक्ट की जाएंगी इसमें हम बात करेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस की पार्ट 1 की और पूरी की पूरी जो आउटलाइन है उस पर आपको लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे. Yes, without further wasting any time, let's talk about the outline of international relations part 1. So you can see here कि जो आउटलाइन है इंटरनेशनल रिलेशंस की वो एक्चुअली डिवाइडेड है इनटू 8 इम्पॉर्टेंट टैग्स और कैटेगरीज. ठीक है, और अगर आप इस आउटलाइन को क्लोजली एग्जामिन करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये जो है काइंड ऑफ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बनाई गई है कि जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेहतर होती जाएगी इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से. सो इन आवर फर्स्ट कैटेगरी यू विल सी हियर दैट इज इंट्रोडक्शन. ठीक है, आप देख रहे हैं कि फर्स्ट कैटेगरी में हमारे पास जो टॉपिक्स दिए गए हैं दैट इज के इंट्रोडक्शन के अंडर दिए गए हैं और इसमें हमारे पास जो है डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस. ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे कि इंटरनेशनल रिलेशंस क्या होते हैं और स्पेशली इन मॉडर्न पॉलिटिक्स हम देखेंगे कि इंटरनेशनल रिलेशंस डेफिनेशन इटसेल्फ जो ओल्ड थी वो क्वालिफाई करती है नहीं. And then we talk about the scope of international relations as a field, as a discipline, and how it matters for all of us in our common lives as well. Okay, so that will be our first topic. Then we'll talk about nation-state system. Nation-state system की history और इसके origins और nation और state क्या होती है और उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, एंड हाउ दे इफेक्ट ऑन इंटरनेशनल सिस्टम. विल टॉक अबाउट दिस इन अवर सेकंड टॉपिक इन मच डिटेल. एंड देन इन द थर्ड यू सी एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी. सो हियर इट मींस वी हैव टू टॉक अबाउट द ओरिजिन्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस इटसेल्फ. तो यहाँ पे हम गालिबन हम ग्रीक्स से बात कर लेंगे. ग्रीक सोसाइटी 5 BC में डेमोक्रेसी जो है वो स्टार्ट होती है ग्रीक्स में. देन जो है वो वहाँ से रोमन एम्पायर सिस्टम जो है फ्यूडलिस्टिक सिस्टम निज़ाम यूरोप का. देन वर्ल्ड वॉर, सारी चीज़ें, कोल्ड वॉर. तो हम एक कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर लेंगे कि इंटरनेशनल सोसाइटी कैसे इवॉल्व होती है. सो दैट इज़ अबाउट इंट्रोडक्शन. इसमें 3 इम्पॉर्टेंट जो है वो टॉपिक्स हैं जो बड़े ब्रॉड हैं. इसमें सब टॉपिक्स भी हैं वो हम डिस्कस करेंगे. एंड देन थ्योरीज एंड अप्रोचेस. कि किसी भी इंटरनेशनल फिनोमेना को समझने के लिए आपको डेफिनेटली थ्योरीज चाहिए. ठीक है, तो थ्योरीज को यूज करते हुए यू कैन एक्सप्लेन दोज फिनोमेनास क्वाइट इजीली. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कोल्ड वॉर है तो कोल्ड वॉर को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे. यू कैन एक्सप्लेन द इवेंट इटसेल्फ बट इट कैन नॉट बी इनफ. अब आप उसको एक्सप्लेन करेंगे विद द पैराडाइम्स ऑफ थ्योरीज. ठीक है, तो इसमें 2 क्लासिकल अप्रोचेस हैं. इस पे बड़े जो है वो डिटेल में हम बात करेंगे. वन इज रियलिज्म एंड आइडियलिज्म. आइडियलिज्म बेसिकली दैट इज लिबरलिज्म. ठीक है, इस पे जो है वो हम बात करेंगे. एंड देन विल टॉक अबाउट साइंटिफिक एवोल्यूशन, बिहेवियरल अप्रोच, सिस्टम अप्रोच, नियो रियलिज्म, नियो लिबरलिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, क्रिटिकल थ्योरी, फेमिनिज्म एंड कंस्ट्रक्टिविज्म. ये तमाम थ्योरीज जो हैं इसमें और भी कुछ मॉडर्न जो है वो रेडिकल थ्योरीज आ जाती हैं. विल टॉक अबाउट देम इन मच डिटेल और हम जो है वो इसको एनालिसिस में लेंगे कि
कोल्ड वॉर को जो है वो कैसे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रियलिस्टिक थ्योरीज और आइडियलिस्टिक थ्योरीज। एंड देन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि थ्योरीज के बाद यू विल फाइंड इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट क्या है 21st सेंचुरी में, ठीक है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस पर बात करेंगे। पावर एलिमेंट्स, नेशनल पावर ये क्या होता है, बैलेंस ऑफ पावर, फॉरेन पॉलिसी के डिटर्मिनेंट्स, डिसीजन मेकिंग एनालिसिस कहाँ से शुरू होती है, इंडिविजुअल से लेके स्टेट, देन ऑन ग्लोबल लेवल, सॉवरेनिटी का क्या रोल होता है, स्टेट सॉवरेनिटी का इंटरनेशनल सिस्टम में, और नेशनल इंटरेस्ट इटसेल्फ क्या होता है, इस पे बात होगी। एंड वी विल टॉक अबाउट दीज टॉपिक्स विथ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। तो हमारा जो थर्ड टैग है दैट इज इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिक्योरिटी। इसके बाद आप स्ट्रेटेजिक अप्रोचेस टू इंटरनेशनल रिलेशंस पे आते हैं, ठीक है। तो इसमें आपके पास वॉर का जिक्र है, ठीक है, टोटल वॉर क्या होती है, लिमिटेड वॉर, एसिमेट्रिकल वॉर, सिविल वॉर, प्रॉक्सी वॉर्स, वो हम इंटरनेशनल जो है वो इवेंट्स को स्टडी करेंगे। एंड देन वी टॉक अबाउट कि वॉर का कॉन्सेप्ट क्या होता है। एंड देन स्ट्रेटेजिक कल्चर, डिटर्मिनेंट्स ऑफ पाकिस्तानी स्ट्रेटेजिक कल्चर, इस पर हम बात करेंगे। और डेटरेंस थ्योरी, थ्योरी ऑफ डेटरेंस प्रैक्टिस जो है वो विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया एंड पाकिस्तान। डेटरेंस की जो थ्योरी है वो पाकिस्तान और इंडिया के कॉन्सेप्ट में कैसे काम करती है ऑन ग्लोबल लेवल, हाउ इट वर्क्स, इस पर भी हम बात करेंगे। सो दैट इज स्ट्रेटेजिक अप्रोच टू इंटरनेशनल रिलेशंस। एंड देन फिफ्थ में इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी, इसमें हम इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी पर बात करेंगे, मर्केंटाइलिज्म, इकोनॉमिक लिबरलिज्म, नियो मार्क्सिज्म, क्रिटिकल थ्योरीज, और विल टॉक अबाउट इंपीरियलिज्म, डिपेंडेंस एंड इंटरडिपेंडेंस, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। अभी थोड़ी देर में आई टॉक अबाउट के कौन से जो है वो आउटलाइन से ज्यादा रिपीटेशन होती है। एंड देन यू सी इंटरनेशनल पॉलिटिकल कम्युनिटी इन द सिक्स्थ कैटेगरी। नंबर वन, व्हाट इज नेशनलिज्म? We'll talk about this in much detail, how nationalism actually impacts in policy making, decision making for any state in the world, or how it works in international relations. Internationalism, globalization, these are very important topics for your CSS exam. तो ये जो है आपकी international political community है. And then approaches to peace, diplomacy, international law, arms control, disarmament, nuclear non-proliferation regime. ये approaches हैं towards peace, towards mutual cooperation and diplomacy, ठीक है, इसमें हम बात करेंगे। And then in the last, we'll talk about international political institutions, United Nations, IMF, World Bank, International Court of Justice. तो कहने का मतलब है कि हम systematically जो है वो overall outline follow up करेंगे, ताकि आप जो है वो एक सिस्टमैटिक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के साथ आप पढ़ें, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बेहतर हो। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट के हम रिसोर्सेज कौन से यूज करने वाले हैं इन अवर लेक्चर सीरीज दैट इज ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस पार्ट 1। तो नंबर 1 वी हैव वर्ड पॉलिटिक्स ट्रेंड एंड ट्रांसफॉर्मेशन 9th एडिशन, विल फॉलो दिस वन, ठीक है। आई हैव this book in PDF as well. I can share with you if you want. We'll provide you this material. And then we have Politics Among Nations. This is another source. And then you have Globalization of World Politics and Introduction to International Relations. So I have these few books with me. So you can see here, that is Globalization of World Politics, Introduction to International Relations, John Bellis and Steve Simmons. And then you see, you have Karen Mink's Essentials Reading in World Politics. This is another source we will be having with us. And we have another very important source, and that is Andrew Hayward's Global Politics. We'll take out some chapters from here as well. So we have a lot of resources here that are recommended by FPSC, Federal Public Service Commission. So we'll take out 3 to 4 resources, and what we shall do
we will actually take out number of topics from them. We'll not read them or will not provide lectures for you from these whole books. सिंपल स्ट्रेटजी हमारी कि हमने आउटलाइन उठाई है और हमने चैप्टर वाइज जो है, जैसे इंट्रोडक्शन का चैप्टर है हमने एंड्रू हैवुड से ले लिया, और देन इंटरनेशनल जो है वो पॉलिटिकल इकोनॉमी कैरन मेम्बर्स से ले लिया, ठीक है। कैरिंग मीन्स essential readings in world politics यहाँ से ले लिया, एंड देन हम यूनाइटेड नेशंस और सिक्योरिटी के जो है वो टॉपिक्स ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड पॉलिटिक्स से ले लिए। तो हम कंबाइनली टॉपिक्स लेंगे और सब टॉपिक्स भी इन्हीं बुक से लेके विल ट्राई टू अंडरस्टैंड के इन टॉपिक्स के हवाले से क्या क्या चीजें। अच्छा, इसी पे डिस्कशन की जाए तो आपको पता लगेगा कि अगर आप पास पेपर देखें अपडेटेड सिलेबस से, तो हमें पता लगता है कि क्वेश्चंस जो रिपीट होते हैं वो एक्चुअली नेशन स्टेट्स के हवाले से काफ़ी जो है वो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। दैट इज नेशन स्टेट्स की जो सिक्योरिटी है वो कैसे मेंटेन की जाए, सिक्योरिटी पे जो है वो काफ़ी क्वेश्चंस जो है वो आ जाते हैं आपके पास। एंड इट्स ऑल्सो नॉट पॉसिबल कि CSS हो और कोई थ्योरी ना आए उसमें आपकी जो है वो फेमिनिज्म पे आ जाती है, कभी लिबरलिज्म रियलिज्म, इनके बीच में कंपेयर एंड कंट्रास्ट करो, एंड पोस्ट मॉडर्निज्म समटाइम्स कंस्ट्रक्टिविज्म पे दे देते हैं क्वेश्चंस। तो थ्योरीज जो है दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई हैव दिस पेपर विद मी, उसमें काफ़ी टाइम जो है वो रिपीट हुए हैं क्वेश्चंस थ्योरी के। पोस्ट पॉजिटिविस्ट अप्रोचेस और न्यू रियलिस्ट वर्सेस कंस्ट्रक्टिविस्ट, न्यू रियलिस्ट वर्सेस कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोचेस, ये फिर से रिपीट हुआ है। कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियलिज्म, रियलिज्म एंड लिबरलिज्म वर्सेस फेमिनिज्म एंड कंस्ट्रक्टिविज्म। तो काफ़ी जो है वो क्वेश्चंस थ्योरीज आए हैं। सिक्योरिटी में देखें तो नेशन स्टेट की सिक्योरिटी, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, नेशनल पावर, बैलेंस ऑफ पावर, वंस अगेन नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है, सिक्योरिटी इन पोस्ट कोल्ड वॉर एरा और चेंजिंग डायनामिक्स ऑफ सिक्योरिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी, न्यू मैरीटाइम सिक्योरिटी, ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट ऑन सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी का जो एक्चुअल टॉपिक है उसमें बहुत ज़्यादा हम फोकस करने वाले हैं, बिकॉज सिक्योरिटी पे क्वेश्चंस जो है वो बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। जी, इसमें इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी से भी क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, ठीक है, और हार्ड पावर, सॉफ्ट पावर, व्हाट इज वॉर, इस पे भी जो है वो क्वेश्चंस आते हैं। तो आई विल शेयर दिस पेपर विद यू, जिसमें आपको जो है वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो रिपीट हुए हैं आपसे शेयर करेंगे, एंड आप खुद जो है वो ड्रिल करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, यू विल फाइंड आउट के इन व्हाट टॉपिक्स दे आर आस्किंग, इन टॉपिक वाइज इन व्हाट डायमेंशन दे आर आस्किंग क्वेश्चंस, ठीक है। तो विल चेक आउट अबाउट दिस, एंड ये जो हमारे पास कुछ सोर्सेज हैं ये हम फॉलो करेंगे। तो सी यू इन अवर नेक्स्ट लेक्चर, एंड दैट विल बी ऑन अवर वेरी फर्स्ट टॉपिक, एंड दैट इज introduction, the definition and the scope of international relations. Thank you so much for listening, and see you in our next lecture.